Sure. We have to start chapter 7 today, no? Yes, ma'am. Last time. Chapter 6 complete up कर दिया बड़ा last मजा time. आया था. I had lovely memory of the ending part. बड़ा मजा आया मेरे को. Yes, yes. ऐसे chapter 6 is जबरदस्त था. चलो, chapter 7 who is reading? I am reading. Or surrender to God. प्राप्ति. प्रपत्ति. प्राप्ति बोलते हैं कि it is also one of the Ashta Siddhi. Yeah. नहीं. ऐश्वर्य के अष्ट सिद्धि जो बोलते हैं हम. अच्छा. सांख्य में प्राप्ति is one of them. मैम ये प्रपत्ति है कि प्राप्ति है? प्रपत्ति है कि प्राप्ति है? प्रपत्ति. प्रपत्ति. दोनों का मतलब एक ही होता है, प्रपत्ति और प्राप्ति. नहीं, प्राप्ति होता तो सिंगल टी होता. ये प्रपत्ति लग रहा है मुझे, पता नहीं तो कुछ अलग हो गया. मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन प्रपत्ति का क्या मतलब होता है? नो आइडिया, आई हैव टू फाइंड आउट. चलो पढ़ते हैं, मालूम पड़ जाएगा. हाँ, प्रपत्ति है, राइट. जस्ट मेरे को प्राप्ति याद आया तो मैंने प्राप्ति पढ़ लिया, डबल टी को टी पढ़ लिया. कोई बात नहीं, पता है. चलो आगे चले. यस, चैप्टर नंबर मैं ही पढ़ रही हूँ. पढ़ ले. मैं पता है नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए भाग क्या ही. चलो, चैप्टर नंबर 7, प्रपत्ति और सरेंडर टू गॉड. Number 32, the magnificent vision of Bhakti. Brothers Arjun, deluded by the senses of mind and not mind, was seeking ways to evade Swadharma when the situation demanded adherence to it. The first chapter describes his vain delusion. The second chapter sets out to remove it. It states 3 basic principles. The self is impressible and has an all-encompassing presence. The body is present and mortal, and Swadharma should never be given up. It also spells out the idea of renunciation of the fruit of action as a key to realize these principles. While expounding this Karma Yoga, 3 concepts have emerged: Karma, Vikarma, and Akarma. In the 5th chapter, we have seen 2 types of Akarma which result from the confluence इकट्ठा करके, combination. Confluence of karma and vikarma. From the 6 chapters onward, different types of vikarma are being explained. The 6th chapter tells about one-pointedness of mind necessary for spiritual pursuit. कितना अच्छा समरी देते हैं ना ये. हाँ, yes, very nice. मतलब नंबर 1, चैप्टर 1 to चैप्टर 6 तक पूरा उन्होंने 1 पैरा में एक लाइन में सब कर दिया. यस यस, डेफिनेशन दे दी. चलो नेक्स्ट. टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द 7th चैप्टर. दिस चैप्टर ओपन्स बिफोर अस द गैलरी ऑफ अ मैग्निफिसेंट न्यू विकर्मा. मूविंग थ्रू एन एक्सटेंसिव फॉरेस्ट, द टेम्पल ऑफ द गॉडेस of nature, we are enthralled and excited or happy. Okay, enthralled by a great many captivity. ये क्या लिखा है मैम? captivity ऐसे यानी अपने आप को पकड़ लेने वाले. Okay, captivating senses, yes, मोहित करने वाले senses. It is the same with the Gita. It now unfolds before us a new vista. Vista is sight. Yes.
चले आगे. Yep. हाँ. Even before unfolding this vista, the Lord reveals the secret of the structure of this world, which creates illusions. An art, artist paints a variety of picture on the same type of canvas and with the same brush. A stage create different ragas out of the same 7 notes. In in literature, a variety of thoughts, ideas, and feelings are expressed through the letters of the alphabet. Same the case with the creation. We find in it innumerable objects and Propensity. propensities. Propensities, tendencies. But all of them are products of only two things: the eternal self and the eightfold prakriti. The anger ये of जो the 8-fold प्रकृति है, हाँ ये वेदांत के हिसाब से क्या है, उधर नीचे दिया है. हाँ फुटनोट But- पढ़ना है. हाँ ठीक है. अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस, माइंड, रीजन एंड ईगो. These are the eightfold divisions तो of पंचमहाभूत my एंड my nature. हाँ गीता ये में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ Yes. प्रकृति इज सीन. और वैसे देखा जाए तो पंचमहाभूत और अंतःकरण देख लो तो एंटायर सब आ ही गया ना, नीचे हाँ, से मैम. ऊपर तक. यस यस लेकिन इसको और- एक प्रकृति बोलते हैं वेदांत वाले. यस. और वो पता है गीता, श्रीमद् भगवत गीता में चैप्टर नंबर 7.4 में शायद उसका अलग से आपके पूरा बताया है. The Sankhya philosophy believes in two eternal principles, Prakriti and Purusha. Prakriti is the primordial matter of material nature which consists of three gunas or constitution, Sattva, Rajas and Tamas. Purusha is the inactive, pure conscious being and it is without gunas. Spirit. इसको हम स्पिरिट को. चलो ये अभी मुझे सांख्य के रिगार्डिंग अच्छे से समझ में आ गया, नहीं तो मैं आपको पूछती थी गुना क्या रहता है, ये क्या रहता है, बट नाउ आप मतलब आपके गुड. वजह से मुझे वो समझ में आ रहा है. चलो अभी हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे. द एंगर ऑफ द एंग्री मैन, द लव ऑफ लवर, द agony of a sufferer and the happiness of the happy one, the drowsiness of the idealer, the activity of the industrious man, all these are manifestation of one and the same cosmic energy. सब प्रकृति है. Yes. These different emotions and urges, often contradictory to each other, spring from the same source. As the cosmic energy within is one and the same in all, the outer bodily cover of all is also the same in nature. The Lord is telling at the very outset that the self, full of consciousness, and the insentient Prakriti are the twin source from which all the creation has come into being. The self and the body, the higher and the lower Prakriti are the same everywhere. Why should man be deluded then? Why should he see difference inside instead of unity? The face of someone whom we love attacks us, whereas that of someone who we dislike is found repulsive. We desire to meet one person and shun the other. Why is it so? Different pictures drawn by the same artist with the same brush on the same canvas evoke different feelings. Therein,
lies the skill of the artist. The artist and the straight have such a skill in their fingers that they make you laugh or cry. In their fingers lies a magical power. मस्त होता है अच्छे से बोलना। अभी अपन ने अभी थोड़े दिनों पहले जो सांख्य में होमवर्क किया, हाँ the taste in all the different tastes, taste sound yes in all the different that types of sound. याद है? yes yeah They are last to nearly, last nearly correct. coming to that idea. Yes very true. चले आगे। हाँ we welcome someone while we shut the door to another space. We embrace someone and push aside another. Such feelings arise in the mind and at times deflect us from the path of duty. All this is because of delusion. If we are to escape this, we should understand the marvelous skill in the Creator's fingers. Brihadaranyaka Upanishad give the analogy of a drum. Drum, A drum. drum, a Drum, drum बजाने वाला produce drum या भरने वाला drum. yes. A drum produce a variety of sound. Some frighten us, some make us dance. If we are not to be swayed this way or that and remain in full control of all such emotions, we must catch hold of the drummer. Then all the sounds of the drum would be under our control. The Lord declares those who want to cross the river of Maya should take refuge in me. उसका footnote है, पढ़ना है? Maya is the creative power of the Lord, which creates illusions. It is the Maya which makes us forget that we are divine. It is the veil that hides the real from us. Yeah. एक मिनिट है मैम। In the words of Jnanadev. In the words of Jnanadev, येथ एकची लीला तरले जे सर्व भावे मज भजले तया एलीची तडी सरले माया जड. Only those who worship me single-mindedly and with mindedly and with क्या लिखा है मैम? Unswerving. Unswerving. हाँ, devotion can cross their river of Maya. In fact, they need not have to cross it at all. For them, the water of Maya drips up while they are at this bank itself. That is the mirage created by Maya. False appearance. Disappearance for them here and now. What is the Maya? It is the Lord's creation power. His art and his skill. He created this world out of the single eternal self and the eightfold Prakriti, or what the Jain terminology calls Jiva and Ajiva. Jeev and Ajiv. The Lord has created this variegated world out of these two elements. Out of them, he is ever creating all sorts of things. They evoke different sentiments and responses. If we want to go beyond them and attain true inner peace, we should reach out for the creator of them all. We should know him. Only then can we get rid out of the delusion that gives rise to divisions, antipathies and attachment. ये बैकग्राउंड बनाया है 7th चैप्टर के लिए पुरुष प्रकृति का, और खास करके प्रकृति के
इतने सारे जो वैरायटी है उसके बारे में बता के। प्रकृति है सो मच वैरायटी। तो राइट फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम सत्व रजस तमस एंड बुद्धि अहंकार एंड पंचभूतस एंड देन ऑल द भौतिक सर्ग। तो प्रत्यय सर्ग की बात कर ली, भौतिक सर्ग की भी बात कर ली, और वेदांत में उसको माया बताया गया है, वो भी बता दिया। और ये सारी माया जीव और अजीव के मेल से हो रही है, पुरुष प्रकृति के मेल से हो रही है, और वो माया है, अविद्या है। और उसकी वजह से हम इतने सारे सब जो इमोशंस के गो थ्रू करते हैं और अलग अलग अनुभव लेते हैं, वो सारा सब इससे हो रहा है। इस बैकग्राउंड के अंदर अब 7 चैप्टर शुरू होगा। अच्छा, चले आगे। हाँ। Number 4. In this 7th chapter, the Lord has thrown open the beautiful mention of Bhakti, a singular singularly effective means, a great vikarma for knowing him, to attain purity of mind. Many vikarma like yajna, नहीं यज्ञ नहीं है, ये क्या है? यज्ञ, 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 दान, जप एंड तप, अच्छा sacrifice, दान, sharing and charity, जप prayer, repeating God's name, tap penance, meditation and penance, meditation and concentration are prescribed. I would liken them to washing soda or soap. While bhakti is like a water, soap and washing soda are useful for only in conjunction with water. By themselves, first class analogy. superb. Themselves, they are on no use. Water, on the other hand, can cleanse even without them, although their aid does result in better cleansing. It is like adding sugar to milk. How can there be purity of mind if the heart and soul are not there in dhyana, meditation, penance, etc.? Bhakti is nothing but such involvement of the heart and soul. Although all the vikarmas stand in need of the aid of bhakti, it is sovereign means it is no doubt advisable that a man trained in nourishing and having knowledge of different remedies should be deputed to take care of a patient. But if he lacks genuine empathy and compassion, he cannot render true service. A bullock may be strong and stout, but it would not pull a cart if does not wish to. It will then refuse to step ahead and may even land a cart in a ditch. Work without involvement of heart and soul, without heartfelt empathy and concern, can give neither satisfaction nor strength. So important. Very nice. So how? Superb. वॉश वाला ओ वो तो बहुत अच्छा, डिटर्जेंट वाला तो बहुत अच्छा था. वही योग में जो हम बोलते हैं आसना विदाउट द एटीट्यूड is what washing powder, soda, everything without water. तो खाली जो आसन करते हैं योग में बिना एटीट्यूड के, वो योग नहीं कर रहे. They are like the bull who will not move, rather take the bullock cart into the ditch. हंसा जी बोलती है ना, yoga is technology. It can make the sage the best of the same, and
टेररिस्ट, द बेस्ट ऑफ द टेररिस्ट। तो तुम भाव किस प्रकार का लगाते हो, उस हिसाब वो से उसका उपयोग हो सकता है। वेरी इसलिए वेरी पहले योग को छुपा के रखा जाता था हाँ कि गलत हाथों में ना पड़े, नहीं तो उसका दुरुपयोग होगा। यस आज सबको अवेलेबल है तो दुरुपयोग हो भी रहा है ना। यस मैम वेरी ट्रू। तो भाव इज एवरीथिंग। चलो 33। Yes. Now you look at Aurangzeb's life. He हाँ was supposed to be very pious, everything. He followed the Quran strictly. But basic tendency of being a despot, being a criminally minded person, it made him more cruel. Instead of making him a better person, it made him more cruel. योगिता, तेरे को ठीक से सुनाई दिया? अंजलि क्या बोल रही थी? हाँ हाँ मैम मैम अंजलि मैम ना औरंगजेब की बात कर रहे हैं। औरंगजेब जो था ना, हाँ सॉरी, औरंगजेब जो थे ना, मतलब वो नमाज वगैरह जो पढ़ते थे वो एकदम या मतलब डिवोशन था ऐसा। हाँ बट वो माइंड उनका एकदम ये था ना, क्रूअल जैसे था, इसके राइट लिए राइट उनको उसमें हाँ हाँ ये उनका बोलना था। करेक्ट। हाँ मेरे को ठीक से सुन नहीं रहा था वो क्या बोल रही थी। हाँ यही था ना आगे मैम। चलो। Yes. हाँ ओके। Number 33, Bhakti results in pure and एलॉयड, मिक्स किए बिना। unallowed bliss. Okay. Alloyed. Number 5, unalloyed. Number 5, if we have Bhakti, we would see the art of that great artist. We would see the brush with which he paints. Once we have reached the source of all creation and have tasted the rare sweetness of water from the spring at the very source, we cannot but find all other things inspired and worthless. इंसिपिड, Insipid. यूजलेस जैसा, Insipid. टेस्टलेस। A man who has tasted a real banana would appreciate the beauty of a painted wooden banana for a moment and then will put it aside. He will not be much enamored. enamored by it. A man who has tasted true joy would not be taken in by external pleasures in the material world. एक तो मिनट है असली मैम, है एक मिनट मुझे, हाँ आप बात करो, मैं 1 मिनट में आती हूँ। चलो हाँ मैम बोलो। तो आज कहीं बाहर बैठी है? नहीं घर पे ही हूँ, अच्छा। ऐसा लग रहा है। हाँ बैकग्राउंड थोड़ा अलग लिख रहा है ना। नहीं नहीं घर पे, वो हर टाइम मैं बेड पे बैठती हूँ ना, आज ये मेरा क्लास जहाँ पे मैं लेती हूँ ना वो हाँ बैकग्राउंड है। वेरी नाइस। ऐसा ऐसा, और आज मैंने मोबाइल से लॉगिन किया है क्योंकि वो लैपटॉप ओपन करो, वाईफाई चालू करो, वो कनेक्ट करो, तो वो फटाफट आके मोबाइल में लगा के बैठ गई मैं। ऐसा इसका ऐसा वाला बैकग्राउंड है, ये वॉलपेपर अच्छा लग बनवाया रहा है। है, ये ऐसे है पूरा, ये घर है उसमें से हम्म वॉलपेपर बना है। नाइस बैकग्राउंड। हाँ वैसा। चलो थैंक यू सो मच। चलो ऐसा स्टार्ट लग करें रहा है आगे। जैसे कि टेरेस पे बैठी हो। हाँ हाँ एक्चुअली वो मैम बहुत मुश्किल से, हाँ बहुत मुश्किल से मिला, ये कैसे कैसे सर्च किया और वसई से जाके लेके आई इसको। मुंबई ऐसा में ना मिलने वाली चीज वसई में मिल गई। हाँ यस मेरे हाँ चलो स्टार्ट करें। हाँ 6th one. Okay. Once some people told a philosopher, "Sir, there is festive lighting of lamps in the city today. Let us go and watch it." The philosopher said, "What is it after all?
only an arrangement of a lot of lamps. It rose, it is it not? I can visualize it for herself, herself. नहीं कुछ तो गड़बड़ है. एक मिनट है मैम. और myself होना चाहिए था. हाँ एक मिनट. हाँ ठीक है. मैं फिर से रीड करूं. ये 6 वाला मतलब मेरा दिमाग ना कहीं पे और जगह पे जा रहा था इसके लिए. Once some people told a philosopher, "Sir, there is festive lighting of lamps in the city today. Let us go and watch it." The philosopher said, "What it is after all? Only an arrangement of a lot of lamps in rows. It is not. I can visualize it for here itself. In an arithmetical progress like 1, 2, 3, fingers can be written up to infinity. But there is no need to write all the numbers if the difference between two succeeding numbers is known. Likewise, one can visualize the arrangement of lamps in rows. What is there to be so excited about it? But man does enjoy such things. He sequences a lemon in water, adds sugar, sips the drink, and smacks his lips in delight. The tongue has, as it were, nothing else to do than to taste different things. From different ingredients, man creates a variety of food products and find all the pleasure in eating them. कितना फूड की बात किए थे ना लास्ट टाइम. सच्ची में नहीं सांख्य क्लास में तो किया था मंडे को ही. यहाँ अब वापस वही सामने आ रहा है. yes that is the maximum thing which people are attached to ना. हाँ. इधर ब्रेकफास्ट नहीं हुआ होता है हम लोग डिनर की सोचते हैं एकदम. बट सी इन सिंपल वर्ड्स कैसे मखमल में लपेट के भी नहीं सीधा सीधा चाटा मारा है. yes चल आगे चले. When I was a child, I once went to see a movie. I had taken a mat with me so that I could go to sleep whenever I wanted. I could watch the dazzling picture barely for a few minutes. My eyes got tired and I went to sleep, asking my companion to wake me up when the show was over. एक मिनट है मैम. हाँ. हाँ when the show was over. Instead of going out in the open and watching the moon and the stars and enjoying the peace and serenity of nature, people go to congested congested theaters and excitedly applaud the dance of the bright moving pictures there. I just fail to understand that. I can see Anjali also laughing away. मैं एक बात शेयर करूं. हाँ. मेरी शादी हुई थी और वैसे मतलब शादी होने के बाद जाते हैं ना ऐसे मूवी देखने के लिए. तो थोड़े टाइम के बाद हम लोग मूवी देखने के लिए गए मैं और भावेश. तो क्या पता क्या था ऐसा वो मूवी के अंदर. हम दोनों गए वो तो सो ही गए. पूरी मूवी में वे सो गए. वे अकेले बैठ के देखने. Oh my God. उस टाइम के बाद मैं कभी मूवी देखने के लिए नहीं जाती. नहीं जा सकती हो उनके साथ मत जाना तुम. नहीं हाँ मतलब ऐसे कैसे देखते देखते सो गए. मूवी चालू हुई और सो गए. उठे मतलब खत्म हुआ तभी मैंने उठाया. चलो अभी घर पे जाना है चलो उठो करके. Are you sure he is not Vinoba Bhave reborn?
तो ये पढ़ के ये सुना देना भावेश को। हाँ वही, ये पढ़ा ना तो मुझे उनकी याद आ गई। मैं बोली ये भी वो भी वैसे ही थे। सो जा वैसे भी भावे को सिर्फ एक ऐसे चार्ट कर दिया है। चलो चले आगे। या मस्त। Why is man so devoid of joy that he seeks and finds some sort of momentary and illusory joy in the dance of those lifeless figures? Evidently, एविडेंटली there evidently there is no real joy in life. That is why people go in for such artificial amusements artificial amusement. Once I heard drums beating next door. On inquiry, I learned that it was to celebrate the birth of a son. Now, what is there so special about it that it should be announced to the world with the beat of drums? People even dance with joy and invite singers on such occasion. It is not Is it not childish? It is as if the world is famous of joy, just as in fam, fam, famine. फैमिश्ड मीन्स जो भूखा रहता है ना वो Hmm, फैमिश्ड इज just as in famine, people rush in frenzy at the sight of a few eatables. फैमिन यानी They कि जहाँ ड्रॉट वो सूखा पड़ जाता है ना, उसको बोलते हैं फैमिन। rush in frenzy at the sight of a few eatables. They jump at the slightest opportunities like the birth of a child or a cinema or circus show because they are starved of joy. Yes. वो सीधी बात है ना कि जो हम में नहीं है हम बाहर ढूंढते हैं। करेक्ट, वही बोल रहे हैं। What is there to rejoice in it? I mean, sometimes like you said ना, I must be smiling. It's because I really कभी कभी रात को अगर cloudy नहीं है तो I can see a lot of stars. So I enjoy going and standing on the balcony, enjoy the breeze and watch all the stars. Correct. It's so peaceful and so nice. Very true, very true. Yes. वहां पर इतना पोल्यूशन नहीं, लाइट पोल्यूशन कम है ना उधर। लाइट पोल्यूशन मेरे बिल्डिंग में ही बहुत है ना। लेकिन एक बार रात के वक्त तो 10-11 बजे के बाद में कम हो जाता है ना। नहीं, द थिंग इज वो कॉलोनी के लाइट्स रहते हैं ना ब्राइट। अच्छा, हाँ, कॉलोनी के ट्रैक्स वो, हाँ, वो तो है। नहीं फिर भी, लेकिन ऊपर देखो तो नीचे का लाइट ध्यान में नहीं आता है। आई एम सफिशिएंटली हाई अप दैट आई कैन इग्नोर दोस लाइट्स। चले हाँ। But is this true joy? Waves of music enter the ears and strike the brain. Different forms enter the eyes and strike the brain. The impact of such sensations is the only source of joy for the poor fellows. Some stuff their nose with snuff, some smoke tobacco, and the kick they get thereby in is a source of tremendous joy to them. Their joy knows no bounds when they lay their hands on a cigarette. But Tolstoy has written that a man may even commit murder under the influence of tobacco. It is too is kind of intoxication. नशा। Yes, Nasha. Why does man lose in himself in such a pleasure, not knowing the real thing? He is infatuated with the Infatuated.
infatuated with the shadows. His pleasures are confined to those derived from the five senses. Had he got a sense organ less, he would have thought that there are only four types of pleasures. If tomorrow's a man with थोड़ी लाए six sense, six sense organs comes down from Mars, such people would feel dejected at the thought that they can have pleasures only from five sense organs instead of six, and in envying the man from Mars, they would exclaim, what a handicap we human beings on the earth suffer from. समझा ना क्या बोले? हाँ, yes, कैसा ma'am. बात मारा है? हाँ, एक के ऊपर एक थप्पड़ ही मारे जा रहे हैं मेरे को लगता है. very true. How can man with just five senses comprehend fully the meaning of creation in all its aspects? Restricted to five senses, he makes his choice within those limits and derives joy from what the senses offer him. He considers the braying of a donkey auspicious, yes, but it is not possible that an encounter with a man could be equally inauspicious for a donkey. You think that? I remember reading this joke and I am sharing it in some context. कि दो बंदर के बच्चे झगड़ रहे हैं. तो एक अपनी माँ को शिकायत करता है कि ये मेरे को आदमी बोल रहा है. दो बंदर के बच्चे समझा. झगड़ रहे हैं. समझ एक में बच्चा समझा. अपनी माँ को शिकायत करता है कि ये मेरे को आदमी बोलता है. समझा. गाली है उनके लिए. हाँ हाँ, हम लोग बच्चों को मस्ती करते तो बंदर बोल नहीं बोलते क्या, वैसे ही. तो वो आदमी बोलता है. बट दिस इज अ मस्त अमेजिंग. वो डोंकी वाला तो बहुत ही अच्छा था. You think that its braying will spoil or harm something that you are going to do, but it is not true that you could also be causing harm to others. When I was a student at Baroda, a group of European singers once came to our college. They were good singers and were trying their best, but I, being thoroughly bored, was waiting for an opportunity to slip out. It was not used to listening to that sort of music. I could not appreciate it. Singers from our country may face similar response in Europe. What is sweet music to the ears of one is just noise for the other. It means that the joy it gives is not real joy. It is an illusory joy until we experience real joy. Such illusory joy would enter ये क्या लिखा है? Enthrall us so long as enthrall means to give you pleasure. okay, enthrall us so long as he had not tasted real milk. Aswathama used to drink water mixed with grain flour, believing it to be milk. Once the true nature of things is revealed to you and you experience the true joy therein, everything else will fall into insignification. Insignificance. तो जितना भी हम मजा लेते हैं सेंसेस से, उसको वो विनोबा जी बता रहे हैं कि ये सब
व्यर्थ है, ये कोई भी मजे वाली चीज नहीं है। देखें आगे बताते हैं क्या फिर मजे वाली चीज क्या है, रियल थिंग क्या है। Bhakti. Number 8. Bhakti is the best way to discover true joy. As we advance on this path, we shall discover the ingenuity. मैम ये क्या लिखा है? इंजीन्यूटी ऑफ द क्रिएटर, यानी Ingenuity. उसकी जो क्रिएशन है, जो Yes. क्रिएटिविटी है। Once we have grasped that divine vision, attraction for other fancies will recede. Then nothing trivial will Trivial, attract छोटा। us. Trivial will attract us. The whole world will then be found filled with one undifferent, अनडिफरेंशिएटेड जॉय। तो हम घूमने undifferentiated को joy. बोल रहे थे, the sound in all the different sounds, the Yes, taste yes. in all the different In tastes, all different the tastes. form in all the different colors and forms. Yes. So till we have discovered that, so it was our exercise to at least open up our mind that there exists something like this. भले मिले नहीं मिले, but at least be open to it. In the true sense, that is where I think last or the previous time this talk had come. In the true sense, it leads to the understanding of Vasudeva Kutumbakam. Yeah. There may be hundreds of sweetmeat shops, but the sweets they sell are of the same kind. So long as we have not tasted the real thing, we go on picking a sweetmeat here and a sweetmeat there, like restless sparrows, and still remain unsatisfied. Once I was reading Tulsidas Ramayana in the early morning hour. Months had gathered near the lamp. A house lizard came there. What interested could it have in the Ramayana? It was happy at the sides of the mouth. Moths. I waved it away when it was about the pounce on a moth. मौत यानी But वो it, उड़ने वाले रहते हैं ना, बटरफ्लाई के हाँ जैसे समझ, डल कलर के। yes, खुद्दी। समझा. But its attention was still riveted on the moth. I asked myself, would you eat a moth? Does your mouth water at its sight? The sight of a moth was not mouth watering for me, and the house lizard had no inkling on the great joy in the Ramayana. It could not taste the sweetness of the Ramayana. Our condition is like that of house lizard. We are engaged in multitude of enjoyments, but how nice will it be if we could taste the true joy? The Lord has shown us the way of bhakti as the means to taste the true joy. इतनी लंबी प्रस्तावना की है, इतनी लंबी प्रस्तावना की है। माय गॉड, भक्ति पर आते आते क्या क्या बोल दिया। कितना सब कुछ व्यर्थ है, वो ही बताते रहे अभी तक। तो हम कितनी मूर्खता कर रहे हैं सच्ची में, को छोड़ के मतलब बाकी सब यदि कर रहे हैं तो। यस, मतलब यहाँ वहाँ हम लोग आनंद ढूंढ रहे, जॉय ढूंढ रहे, बट ओरिजिनल जॉय इज इन भक्ति। जो असली चीज है वो पीछे ही रह जा रहे। यस, वेरी ट्रू। मतलब कि ऐसा बोला जाता है कि सुख और आनंद, ये ना, मतलब ये मुझे ये वीक में समझ में आया। मुझे नहीं मतलब मुझे पता ही नहीं था सुख और आनंद के दोनों के बीच में डिफरेंस है ऐसा, बट वो समझा
और इसको पढ़ा ना तो वो और मतलब कंफर्म हो गया कि भक्ति ही आनंद है और जॉय है, ऐसा मतलब वो Correct. सुख अलग है, मतलब वो थोड़े टाइम के लिए रहता है, उसके बाद तुरंत ही दुख आ ही जाता है, बट भक्ति के आगे पीछे कुछ नहीं है, भक्ति मीन्स सिर्फ भक्ति, सिर्फ वैसा। भक्ति है सर। यस, वैसा। तो वाह। ये पढ़ने के बाद रियलाइजेशन। प्रियंका आज कुछ नहीं बोलेगी? No, ma'am, I'm just listening. प्रियंका ऑलरेडी भक्तिमय हो गई लगता है। चलो, how nice that we could meet and we could read मस्त. this. So